एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द मोमेंट ऑफ करेज रिटन बाय पद्मा सचदेवा। तो इस पोएम को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट एक पढ़ेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है इससे रिलेटेड। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोएम अबाउट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। नेचर और ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप बताया हुआ है। It also provides some glimpses of the village life away from the hustle and bustle of the urban society. The elements of nature that one finds in the poem are a hill, the well at its bottom, water covered by the green mango blossom, and the solitary calf that meets a tragic end in the depth of the well. वही है, नेचर से रिलेटेड चीज़ें, हिल है, वेल है, पानी कवर्ड है, किससे कवर्ड है? ग्रीन मैंगो ब्लॉसम से। और सॉलिटरी काफ है जो कि जिसका कि ट्रेजिक एंड हो जाता है, वो पानी में डूब जाता है। ऑल देयर आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द कंट्री साइड देन विथ टाउन्स एंड सिटीज़। अब ये सब चीज़ें जो है टाउन और सिटी में तो मिलती नहीं है, विलेज में ही मिलती है। द पोएम ऑल्सो रेफर्स टू सुपरस्टिशन एंड कास्ट कंसिडरेशन दैट कीप द पीपल अवे फ्रॉम द वेल आफ्टर द ड्राउनिंग ऑफ द अनफॉर्चुनेट काफ। तो इसमें एक कास्ट कंसिड्रेशन है, एक सुपरस्टिशन तो है ही कि अब उसमें जाके वो मर गया है तो हम उसका पानी नहीं पिएंगे। इट कुड बी प्रिज्यूम्ड दैट द काफ्स बॉडी मस्ट लेटर हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वेल, बट नो बडी वुड केयर टू गो बैक टू इट फॉर अ बाथ और अ ड्रिंक ऑफ वाटर। अब सबको ये लगता है कि उसमें काफ की बॉडी गिरी है, हालांकि वो निकाल दी गई है, फिर भी लोग जो हैं उस पानी को पीना नहीं चाहते, ना तो नहाना चाहते हैं उस पानी से। The poet is a different kind of person from the common people. She does both these things but only in the darkness of the night. Yet she waits for that courageous moment when she would drink from the well in the broad daylight. Poet जो है वो different है, वो नहाती भी है उसके पानी से और उसको पीती भी है, बट रात में। पोइट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी दिन के टाइम पे जाके वहाँ के पानी से नहाए या उस पानी को पिए। तो शी इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द थिंग करेजियस मोमेंट का वो वेट कर रही हैं कि कभी तो ऐसा होगा। द पोएट राइट्स अबाउट द वेल which is to the right of the village hill and full of water. Now we are starting with the line by line explanation. Okay, अभी पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ है, to the right of our hill there is a well shining and brimful. So the poet writes about the well which is to the right of the village hill and full of water. Brimful means full to the top. Okay, now last year summer covered it with the green of mango blossoms. It tempted a calf which fell in and drowned. Tempted means attracted. तो ये बोल रहे हैं कि one particular summer it got covered by the green mango blossoms that attracted a calf which wanted to feed on it and consequently drowned in the well. Now third para, since then no one drinks of that well at night like a thief. I bathe in it, I cup my hands and drink, but love is not quenched, not thirst. Quenched means satisfied, as one's thirst after drinking water. पानी पीने के बाद जो प्यास बुझ जाती है ना, वैसी प्यास नहीं बुझी। तो since that day, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसको, सिंस दैट डे नोबडी ड्रिंक्स द वाटर ऑफ दैट वेल, बट द पोइट समटाइम्स गोज सीक्रेटली एट नाइट टू बेथ इन इट एंड ड्रिंक फ्रॉम इट. Yet by doing so she doesn't get full satisfaction. Fourth paragraph, in the deep dark of the well there are wistful means full of sad desire, shadows waiting for the maidens who hung a rope on its nail but never came back to draw water. अब ये बोलती हैं yet okay, अब ये बोलती हैं कि she thinks there are in it dark and sad shadows of the girls who stopped going to the well for drawing water.
वो कहती है कि वो उसको उनको ऐसा लगता है, जो पोइट हैं उनको ऐसा लगता है कि एक डार्क और सैड जो है वो शेडोज़ है वहाँ पे गर्ल्स की। इस गर्ल्स तो चली गई लेकिन शेडोज़ वहाँ रह गई जो कि बहुत डार्क और सैड हैं ना। uh, she thinks there are in it dark and sad shadows of the girl who stopped going to the well for drawing water। मतलब लड़कियां तो चली गई लेकिन उनकी शेडोज़ वहाँ रह गई हैं। जस्ट वेट। द डार्क ऑफ द, अब मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, ये 1 2 3 4 6th पैराग्राफ है, इस 5th पैराग्राफ है इसका पोएम का। द डार्क ऑफ द वेल लॉन्ग्स फॉर दैट मोमेंट ऑफ करेज when in full sight of all my hands will stretch out for a drink। अभी बोल रहे हैं कि the well too perhaps waiting that day when in full sight of all the villages the poet will dare to extend her hands for a drink of water। वेल को भी इंतज़ार है कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जब पोइट जो हैं वो आएंगी और वहाँ का पानी पिएंगी डे लाइट में। नाउ एक्सप्लेनेशन इज़ फिनिश्ड। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि मैं पढ़ती हूँ। टू गिव वॉइस टू हर लव फॉर द वेल, Padma Sachdev uses certain pleasing images like the shining brimful water, green mango blossoms, wistful shadow of the maidens, and the rope on its nail. These images give the well a life of its own and personify it as a human being, waiting to welcome back its former friends. There is a touch of sadness in the reference to the maidens who never come back. It recalls the fate of the village girls who get married and go away to the homes of their respective husbands. Gesture of hanging the rope of the well on its nail conveys the sadness of farewell and departure. The poet's own longing for the well is in contrast to the dismissive attitude of the other villagers. She is only trying to rise above her weaknesses of going to the well only at night and not in broad day light. Thank you so much. It is finished now.